डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी. Good evening, myself Dr. Naishal Raval would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last sessions, we had talked about the Indian economic environment, part 1 and part 2, where we had discussed about the natural resources, we had discussed about the fiscal policies as well. We had also discussed about the trade policies, including the agriculture policy and the industrial policies, followed by the economic reforms of 1991. In today's sessions, we will be covering topics related to the money market and capital market. So once again, I would like to welcome you all in the sessions. Paper 301. Name of the paper is Business Environment. Block 3, Indian Economic Environment and the Global Dynamics. Unit 3, Indian Monetary and Fiscal Policy with the help of an exchange rate. These are our learning objectives. The concept of money market, capital market, concept related to the foreign exchange regulations, concept of monetary policy, and the concept of the fiscal policy. So let us see with the introductions. If we talk about the market, especially Indian money and the capital market, so we can say that it is a place where short-term and long-term funds are borrowed and also can lend that product. These both are considered as a well-developed market which helps the economic by lending and borrowing the funds to the producer and many other stakeholders. Foreign exchange regulation is also an important aspect for any country as it regulates the demand and supply of foreign fund and it channelize into the particular sector. If we talk about the Indian policy for foreign exchange, so before 1991, we were a bit strict in terms of foreign exchange regulations, but later on we developed the liberal policy, that is after 1991 economic reforms. पिछली क्लास में हमने डिस्कशंस किया था कि इंडिया का इकोनॉमी ना दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक है 1991 के पहले का इकोनॉमिक, दूसरा है 1991 के बाद का इकोनॉमिक. बाद में जब देखा जाए 1991 के बाद, तो उसमें लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइजेशंस हुआ था. तो 1947 से लेकर 1991 तक हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, बट लेटर ऑन हमने लिबरल पॉलिसीज अपनाई थी उसके लिए. एंड पॉलिसीज आर कॉमन इन एवरी कंट्री, बट इट इज़ वेरी मच डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, हर एक कंट्री में दो पॉलिसी काम करती है. एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी. Monetary policy is ruled and regulated by the Reserve Bank of India. Fiscal policy is ruled and regulated by the Ministry of Finance or Government of India. Let us see into the detail about the money market and the capital market. So what is money market? Okay. Money market is considered as a credit market where short-term funds have been borrowed. It contains borrowers and lenders for the short term, कम समय के लिए. ठीक है, अब बोरोवर्स कौन होता है? तो कि सबसे पहला मर्चेंट, ट्रेडर, ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्पेक्युलेटर्स, गवर्नमेंट. लेंडर्स कौन होता है? तो कि कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, सेंट्रल बैंक्स, एक्सेट्रा. दीज आर द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स ऑफ मनी मार्केट. इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, so we can say it is being seen that it is well organized and developed money market with the help of getting economic growth and stability, which performs the diversity of functions in terms of banking structure of our country. So what is money market? How it can be seen? It is a well organized, developed money market जो economic growth और stability लाने के लिए काम करता है. Diversify functions, especially in terms of banking structure of our country or economy.
ठीक है, अब उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा, इट शोज द कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंसर्न, बिजनेस कॉर्पोरेशंस एंड सेवरल इन्वेस्टर्स फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स दैट मेक देम टू यूज एक्स्ट्रा रिजर्व इन एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको पैसा मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और उसमें उनको एक्स्ट्रा रिजर्व्स मिलते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है प्रॉफिट में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। It shows the short-term funds to the businessman. It shows the short-term funds to the industrialist, traders, so as they meet daily needs of working capital. Business में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कभी मनी मार्केट से पैसे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। In the short-term funds, not to the private businessman, but also it gives to the government and related agency. सिर्फ प्राइवेट को पैसा नहीं देते, वो गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं और दूसरी उसकी जो एजेंसीज होती है वहाँ पर भी पैसे देते हैं। So it includes the businessmen with the extra fund so as to invest in the short period of time. अगर किसी को और किसी बिजनेसमैन को कम समय में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मनी मार्केट का उपयोग कर सकता है। It is a medium by which central bank of any country exercise control or creations of the credit. ठीक है? It serves as a great help to the government. When we talk about the characteristics or features of Indian money market, so it is divided into two parts. Whether it is a organized sector, it is a unorganized sector as well. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है तो वेल चैनलाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है वो चैनलाइज इतना नहीं किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा डील करते हैं उसमें। वो पिछले सेशंस में हमने देखा था पैरेलल इकोनॉमी के बारे में, कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो इट डज नॉट गो हाईली ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ मनी मार्केट। भले ही ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है कि उसको सक्सेसफुल हो सकता है, अभी भी उसको चैनलाइज करने का थोड़ा बहुत ज़रूरी लगता है। It does not have adequate and continuous supply of short-term assets, which includes the exchange bills, treasury bills, or any short-term government bonds. There exists no dealer in short-term, which acts like an intermediary, which exists among the government and the banking system. बीच में कोई interference है ही नहीं, या intermediaries बिल्कुल भी नहीं है short-term assets के लिए। It does not contain the essential sub-market like acceptance market, commercial market, etc. It is also noted that there exist no proper coordinations among the different sections of the money market. कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है, no interconnections among the different sections और different sector की हम बात करें मनी मार्केट के, often losses and uncoordinated. So इसमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी एक्सचेंज रेट के साथ कैसे डील करता है? देयर रिजल्ट नो यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द इंटरेस्ट रेट्स, ऑलवेज डिफरेंट compared to the certain financial institution as well as the various financial centers. Money lenders especially charge high rate of interest because they are working in the unorganized sectors. The money market does not attract the foreign fund as well as London money market does, and Indian money market lacks standards, a lack of standards in the international status. तो हमारा जो मनी मार्केट है वो हम तक ही लिमिट रहता है क्योंकि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वे में वो काम करता है. इट इज़ कैन नॉट बी ए यूनिफॉर्मिटी और इट डज़ नॉट अट्रैक्ट एनी फॉरेन फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री जैसे लंडन मनी मार्केट करके आता है. The Reserve Bank does not possess adequate capacity and does not have power to influence and control of any entire money market. पूरा money market का control उनके पास भी नहीं है. It has no adequate control over the policies, functionings of the unorganized part of the money market. So these are the features of Indian money market. In short, highly organized banking system के साथ वो काम नहीं करता successfully. दूसरा एडिक्वेट कंटिन्यू सप्लाईज ऑफ शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज नॉट बीइंग इंक्लूडेड. एक्सेप्टेंस और कमर्शियल बिल मार्केट डज नॉट इंक्लूड इन दिस मनी मार्केट. Lack of coordinations among the different sector of the society and the economy as well.
फॉरेन की जो पॉलिसीज़ है, एक्सचेंज रेट्स वगैरह है, उसके साथ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी उतना काम नहीं करता था। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे जितना लंदन मनी मार्केट करता है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डू नॉट हैव फुल एडिक्वेट कैपेसिटी and full power to influence the control of entire money market, and it has no adequate control over the policies and functioning of the unorganized part of the money market. So let us come with the capital market. After talking about the money market, let us describe about the capital market. It thinks about the institutional arrangement for facilitating the borrowing and the lending of long-term funds. मनी मार्केट क्या था? शॉर्ट टर्म था। बोरिंग लेंडिंग तो वो भी करता है, बट किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या करता है? बोरिंग लेंडिंग करता है, बट किसके लिए? तो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स रहते हैं। आइए देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या कहते हैं। इट इज़ अ कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, comes from the corporate enterprise, public sector enterprise, semi-government institutions. In India, even the organized sector of capital market was ill-developed until recently because of following reasons. इतने तेज़ी से हम कैपिटल मार्केट को डेवलप नहीं कर पाए, उसके कुछ रीजन्स है कि भाई एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर एज ए मेन ऑक्यूपेशन, लेकिन वो इतना सफिशेंट नहीं था क्योंकि मार्केट वॉज इल डेवलप्ड टिल द रिसेंट, ड्यू टू विच डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू द inflation of the securities. The foreign business household held back growth of securities market, and variations in the restrictions have been imposed on the investment patterns from various financial institutions before 1991, and the investment habit of an individual has been very low. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की हम बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट्स की जो हैबिट होती है वो उसमें उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो कैपिटल मार्केट भी इतना सक्सेस नहीं था। अभी आजकल कोविड के टाइम से बहुत सारे लोगों के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, तो इक्विटी सेविंग्स से लेकर म्यूचुअल फंड सेविंग्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते रहते हैं, बट इतना अवेयरनेस नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स, राइट। अगर गवर्नमेंट बैंकिंग में 10% ब्याज चलता है तो प्राइवेट के पास से तुम पैसा लेते हो तो 25-30% ब्याज लेगा। नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में जब सब्जी बेचने वाला बंदा प्राइवेट के पास पैसे लेकर आता है, उनसे पैसे लेकर आते हैं, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी चुकाते हैं और अंत में देखा जाएगा कि वो लोग कितना कमाते हैं। सो मेन डिमांड इन दी अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, private individuals for the consumptions rather than productions, and even the small traders. आज मुझे अगर कुछ पैसे में कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना और पैसों की ज़रूरत पड़ी है, मैं बैंकिंग पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा कुछ कारण की वजह से, तो मेरे पास प्राइवेट लेंडर्स पड़े हैं, बट दे विल बी चार्ज हाई इंटरेस्ट फ्रॉम मी, एंड द सप्लाई ऑफ मनी मार्केट कम्स फ्रॉम ओन रिसोर्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड फॉल शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। अगर मैं ज़मींदार हूँ या मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है तो मैं उस ज़मीन को भाड़े पे चढ़ा सकता हूँ, ये भी एक ऑप्शन है। मेरे पास ज़्यादा कैश पड़े हैं तो किसी को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो ज़्यादा ब्याज पे पैसे भी दे सकता हूँ उसको। तो दीज आर द वे ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। नाउ व्हाट डज इंडियन कैपिटल मार्केट कंपोनेंट इंक्लूड? व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स? ठीक है, इट इज़ अ न्यू इश्यू मार्केट, stock market, financial institutions. Now main financial institutions that are active constituent of Indian capital market. Indian capital market में ज़्यादा रोल प्ले कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रहता है? तो सबसे पहला है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFC, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, National Industrial Development Corporations, Unit Trust of India, Life Insurance Corporation of India, Nationalized Commercial Banks, Merchant Banking Institutions, Credit Guarantee Corporations of India. These are the financial institutions which helps for money lendings to the required person or a required agencies, the financial institutions. ये सारे लोग पैसे देने की बात करते हैं। After talking about the money market and the capital market, there is a
a FERA Act, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब ये क्या है? तो फीचर्स की मैं बात करूं सबसे पहले तो गवर्नमेंट विल कंट्रोल फुल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑल द फॉरेन करेंसी मस्ट बी सरेंडर्ड टू द सेंट्रल बैंक, central bank fix the official exchange rate, central bank will be regulating the currency to supply to the importers, exporters are required to surrender all the foreign currencies earned from the export। कोई कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसको भी यहाँ पर सरेंडर करना होगा। Some specific sanctioned bank and the foreign exchange centers can deal in the foreign exchange only. Western Union, right? So such exchanges are there in our country which work with the banks. The central bank can act as a discriminatory agency as it can change or lower rates for the essential import and high rate of luxurious product. These are the various characteristics or features of Foreign Exchange Regulation Act. Let us talk about the objectives of FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act का main objective और main aim कौन सा है? Overvaluation of currency, undervaluation of currency, stopping the fluctuations of currency, protection strategy and check the balance of payment, whether your balance of payment is getting balanced or not. It could be surplus, it could be deficit. डेवलप्ड है तो वो डेवलप कंट्री है तो वो सरप्लस जाएगा, डेवलपिंग है तो वो ज़्यादातर डेफिसिट रहेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बैलेंस करने के लिए हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाउ इन एनी कंट्री you will be finding the two policy, one is the monetary policy, second is the fiscal policy। पहले भी मैंने कहा था कि monetary policy is being regulated by the Reserve Bank of India। Currently Shaktikanta Das is the governor of RBI। Before Shaktikanta Das, Dr. Urjit Patel was the governor। Before Urjit Patel, Dr. Raghuram Rajan was the RBI governor। So if we talk about the monetary policy during the global financial crisis, Dr. Raghuram Rajan was there as a governor, and later on in the year 2016 or maybe 15 somewhere around, Dr. Urjit Patel had taken over as a part of the governor RBI, and during the demonetizations of 2016, Urjit Patel was the RBI governor, and during the COVID, and the current governor of RBI is Dr. Shaktikanta Das। So monetary policy is always responsible for the credit creations and the liquidity in the economy or in the country। Say for example, industrial, agriculture and service sector needs a credit or monetary policy control it through over the various instruments and the measures। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक में जाते हैं और बैंक से पैसा आता है तो क्या RBI से आता है। तो RBI का काम या मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है तो कि क्रेडिट क्रिएशंस एंड लिक्विडिटी कंटिन्यू रहे इन आवर इकोनॉमी। 2016 डिमोनेटाइजेशंस की मैं बात करूँ तो उसमें क्रेडिट क्रिएशंस भी हुआ था। कुछ समय के लिए लिक्विडिटी को स्टॉप किया गया था, खासतौर से 500 और 1000 की नोट वो जितने टाइम के लिए बंद रहा, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन में सीधा 2000 का नोट मार्केट में लॉन्च किया गया, फिर 500, फिर 200 और फिर 100 रुपये का नोट मार्केट में धीरे धीरे करके आने लग गए। सो ये काम मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है। अब RBI के पास 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। मनी सप्लाई इन कंट्री होना चाहिए, वो RBI का एक मेन फंक्शन है। अब कौन कौन से वो 4 मेजर है तो कि M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 में क्या आता है? कैश विद द पीपल, वेदर वो कॉइन हो या करेंसी नोट्स हो, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, M4 में M3 प्लस all the post deposits are there। Normally RBI and government gives the importance to the M3 money supply। M1, 2, 4, 3 के छोड़कर 3 को मनी सप्लाई को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। Earlier we were giving the importance to the M1
which was considered as a very important money supply measure. Currently we are giving an importance to the M3. M3 में क्या क्या आता है? M1 आता है प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स आता है. M1 में क्या आया? तो कि कैश और नोट्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड द अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट आर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? हमने बोल तो दिया कि वो क्रेडिट को क्रिएट करता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत फेरबदल करता है. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं? कुछ है सिलेक्टिव मेथड्स है, कुछ है क्वांटिटेटिव मेथड्स है. क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपको मिलेगा वेरियस बैंक रेट्स है, कैश रिजर्व रेशियो है, रिवर्स रेपो रेट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एंड द ओपन मार्केट ऑपरेशन है. Selective credit regulations are very important part of with the time when the government of RBI want to increase or decrease the liquidity in some particular sector or industries of a particular part of our economy. So instrument की मैं बात करूँ तो monetary policy के दो पार्ट है, एक है quantitative, दूसरा है selective methods. ठीक है, quantitative में आते हैं CRR, SLR, RR, RRR and BR. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सिलेक्टिव क्रेडिट में आता है इंक्रीज डिक्रीज लिक्विडिटी इन वन पर्टिकुलर, टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर्स. आफ्टर डिस्कसिंग और टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, लेट अस फोकस मोर ऑन द फिस्कल पॉलिसी. This is the policy related to the taxations and the public expenditure. This is being regulated by the Ministry of Finance or Government of India. नॉर्मली देखा जाए कि कोई भी कंट्री में हमने ये बोल तो दिया कि हर एक कंट्री में ये दो पॉलिसी रहती है, मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी, एंड दिस बोथ द पॉलिसी आर कंसिडर एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इफ दे डज नॉट कोऑर्डिनेट टू ईच अदर तो फिर हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. कोऑर्डिनेशंस दोनों के बीच में होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये लोग, राइट. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी दोनों पॉलिसी का सहारा की ज़रूरत होता है. कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लड़ने के लिए भी दोनों पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है, एक साथ काम करना. सो कोऑर्डिनेशंस दोनों के बीच में रहना चाहिए. इन सो इट इज़ बीइंग सेड दैट दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, और एक को देंगे और इसको नहीं देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट करेगा. ठीक है. Finance Minister presents the budget every year, which comprises all the income and expenditure on the basis of past data, estimating the future or upcoming year. There is a special post which is independent, that is Comptroller and Auditor General of India, CAG report जिसको हम कहते हैं, which does the audit of income and expenditure. किसका? तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. And report of CAG is discussed and considered most important document for the assessing the government's transactions done inside the India as well as outside the India. And the best example मैं fiscal policy का बात करूँ तो economic crisis of 1930s Great Depression. ठीक है. So Indian monetary and fiscal policy work with the exchange rate, currency exchange rate. ठीक है. After discussing about the monetary policy and the fiscal policy, including the Foreign Exchange Regulation Act, here we are going to end our sessions with the Indian economic environment and the global dynamics. So once again, I am highly thankful to you. In the next sessions, we will be talking about the various Indian dynamics, including the world or a global dynamic in the unit 4. Once again, I am thankful to you. We are ending our sessions over here. Thank you very much. स्वाध्यायः परमं